आज के इवेंट के हवाले से कहूँगी कि बहुत अच्छा इवेंट था। इसमें रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया, मालूमात को यहाँ पे एक अच्छे तरीके से शेयर किया गया। इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि लोग एक्सेस टू जस्टिस को यकीनी बनाया जा सके, और इसके साथ साथ जो सर्विस डिलीवरी है, कैसे इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी हो सकती है, उसके लिए भी लोगों को मालूमात दी जाए। तो ये इवेंट उस सारे पर्पसेस को फिल करता है। एंटी हरासमेंट वर्कशॉप्स वेरी यूज़फुल बिकॉज यहाँ पे हर तबके से पार्टिसिपेंट थे। पहली बात, एक तो लॉयर्स भी थे, हमारे जो स्पीकर्स थे स्पेशली पैनल टॉक्स बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि उसमें हर जो है फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, FIA से एक्सपर्ट आए हुए थे, लॉयर एक्सपर्टीज थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मौका मिला। इस किस्म के वर्कशॉप से उन्हें हेल्प मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि हरासमेंट है क्या, उसके खिलाफ कैसे जाना है और उसके अगेंस्ट में कैसे खड़े होना है, कि कैसे फेस करना है। और हमें भी चाहिए कि सोसाइटी में हम सपोर्ट करें जो लड़कियां ख़ासतौर पर रिमोट एरियाज से, जो अनएजुकेटेड एरियाज से, जो लिटरली मतलब जहाँ पर हरासमेंट का कुछ पता ही नहीं है, तो वी शुड सपोर्ट देम एंड वी शुड स्टैंड बाय देम। थैंक यू। Harassment. So the session was wonderful. The participants were very interactive. Lot of questions was asked, and my main role was to explain the role of FIA with reference to Pakistan Electronic Crime Act 2016, and to apprise the participants how to approach the FIA in case they become the victim of the crime. So it was a wonderful experience.